करिए मनमोहन जी, शुरू करिए। Yes. Okay. Namaskar, I welcome all of you in this webinar of BVSS. The topic for the today is Digital Personal Data Protection Act 2023, introduction with practical aspect and करिए मनमोहन जी, शुरू करिए। Yes. professional opportunities. So this act is recently. I welcome all of you in this webinar of BVSS. The topic for the today is Digital Personal Data Protection Act 2023, introduction with practical aspect and करिए मनमोहन जी, शुरू करिए। Yes. professional opportunities. So this act is recently. I welcome all of you in this webinar of BVSS. The topic for the today is Digital Personal Data Protection Act. Repeat हो रहा है कुछ? YouTube on है आपका, I think YouTube on है। किसी का YouTube ऑन है, एक बार प्लीज चेक कर लेंगे। किसी का YouTube on है, उससे रिपीट हो रहा है। जी। YouTube को म्यूट कर दीजिए and then start. Okay, let's start again. Yes, please. So the topic for the today is Digital Personal Data Protection Act 2023, introduction with practical aspect and professional opportunities. So friends, as you know that this act is recently passed by the central government, and this is very important act because everyone is affected with this act because सबका personal data जो है वो involved है इसमें, तो we decided that this topic should be discussed on the BVSS platform, and also that what are the professional opportunities out of this act. So for today's deliberation, we have with us the versatile, eminent personality, speaker, advocate, CA, CMA, Mr. Gajendra Maheshwari ji. साथ में पैनलिस्ट है CA सुमित गर्ग जी और शशांक जी अभी एब्सेंट है, शायद ज्वाइन करेंगे हमारे को, एंड साथ है हमारे पुनीत अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट BVSS, CA संदीप शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी BVSS. As we start every program of BVSS with Vande Mataram, let's start with Vande Mataram first. Vande Mataram, Gaurav. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam Malayam Shatyam Vande Mataram. Thank you. Before we start on the deliberation, I would like to invite Puneet Agrawal ji, President BVSS, to say something about this act. Puneet ji. Thank you, Manmohan ji. Thank you. And I welcome all the delegates who have joined us to attend today's program. And I also welcome my dear friend who is the speaker for today, Gajendra. आपको गजेंद्र जी के बारे में मनमोहन जी ने बताया. Gajendra ji is a versatile personality and from a background which is entirely different. He has traversed into various territories. And what I understand is, though he might have done many other things also recently, but he has been doing tax in Middle East. He has been working on data protection. And when you will listen to him, you will definitely come to know about the depth of his understanding, his knowledge on this subject. But before we begin with Gajendra ji, we all know that data is today, it's like
what we call data is the petrol of today or the oil of today. And if you look at modern companies who are becoming more and more successful, it is all on the basis of use of the data. I remember one example, the success of Bajaj Finance. Bajaj Finance initially targeted dentists and chartered accountants. And it became so successful that it is said that it has data of doctors who are working in different field, in different cities, what kind of a specialty they have, and scores based upon that. So if you have data which is so granular and which contains so many heads and information, how easy it becomes for the management who is steering, for example, a credit team and who is determining the credit policies of a company to decide that this much credit can be given even without blinking an eye to a person because his data is already available and there is no need for any further determination to be done. This one example can tell us the power of data, and the examples can be multiplied. I'm sure speaker of our day will definitely be taking us through different types of uses of data and how they are being regulated. And if we come to the another spectrum of this, though businesses can use data, but can people take others' data indiscriminately? Can they use it in whatever manner they want to? Can they store it in whatever manner they want to? Or a person whose data it is has some rights over that data, which is his data. And that debate was going on for a long time. Supreme Court settled in Puttaswamy case that Article 21 of our Constitution, which talks about fundamental rights, one of the facets of that article is privacy of our own data. So if that be so, the government is probably trying to now bring in a legislation which can balance the rights along with obligations of those who store it, who use it, etc. And I'm sure that since though it would be easier for larger organizations to cater with it, who will be having proper policies, etc. around these, but I'm sure that this law would ultimately be applicable to even smaller organizations who are seeking to use data. If that be so, do they have or would they have the paraphernalia and the infrastructure to built-in teams who would be equipped so that they follow the law of the land that has recently been enacted? Or would there be professionals who would be emanating, who would be flourishing in this field to advise their clients as to what kind of limitations they have, what kind of obligations they have, what kind of a regulatory regime is there for the use of the data? All these aspects are going to become very important, and I'm sure the degree and the depth of this subject would ultimately require a lot of amendments, introduction of law, and we don't know if tomorrow there would be rules, regulations, circulars and notifications the way we have it in tax laws also. And for that, I'm sure that it will open up a lot of opportunity for us, the professionals. And if that be so, I think we are going to have another, I would say, armory, which professionals can flourish into, a field in which professionals can gain more in-depth knowledge and start helping their clients. So we all look forward to today's session. I again welcome all of you, and over to you, Manmohan ji, for taking it further. Thank you, Puneet ji. I welcome Mr. Shashank Agrawal, who recently joined. He is our other panelist. So before we start with the deliberation of Gajendra ji, I would like to brief his profile. अभी वैसे तो पुनीत जी ने काफी कुछ बताया है. Mr. Gajendra Agrawal ji, sorry, Maheshwari ji, is basically versatile professional. He's a chartered accountant, cost accountant, and has a master degree in law. He's a certified privacy professional accorded by the Data Security Council of India. Apart from that, he works with various countries, various state in India, और अलग-अलग फील्ड में इन्होंने अलग-अलग अपने इनपुट्स अलग-अलग गवर्नमेंट्स को दिए हैं. तो इस
इनका प्रोफाइल तो बहुत बड़ा है, बट अभी जब आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि अपने फील्ड के गजेंद्र हैं ये। अपने नॉलेज के गजेंद्र हैं। तो ओवर टू गजेंद्र जी, प्लीज स्टार्ट। Thank you so much, Manmohan Ji Sharma, and thanks to Bhartiya Vittya Salakar Samiti for having me here today to deliberate on this upcoming important law for all of us in different capacities. I'll try to justify the expectations. And my dear friend Puneet Agarwal, president of the Samiti, as soon as the law came out, approached me and said, this is the apt time for having this deliberations. We have had this deliberation in bits and pieces. जब भी हम कोर्ट में मिलते थे, we had some discussion around this topic, but this is the right moment for all of us to gear up our understanding for this important law, piece of law that has already been enacted by the Parliament. So with your permission, Puneet, with the permission of Organizing Secretary Manmohan Ji, General Secretary Sandeep Ji, and also my co-panelists, Sumit Ji Garg and Shashank Ji Agarwal, let's start the deliberation. I'll share my screen and kindly confirm once it is visible to all of you. So Yes. I hope it is Yes, it is there. visible. Yes. There, yes. Okay. Yes. So, okay. So to Please. begin with, the law is called Digital Personal Data Protection Act 2023. It has been in the Parliament since 2018. We will go with the timelines quickly, just to give a perspective of the history of enactment of this law. कब क्या किस तरह से enact हुआ? But एक important चीज, I hope this mix of Hindi and English will be fine, right, sir? Right, Manmohan ji? Yes. So, बिल्कुल ठीक है. Okay, fine. All right. So first of all, earlier in its earlier avatars, the bill, not the act, the bill was called Personal Data Protection Act. In one form, it was changed to not just personal but also non-personal data. अभी हम देखेंगे क्या personal data है, क्या non-personal data है. Okay. So there have been a lot of this back and forth. But finally जो bill आया है, उसमें आप देखेंगे बड़ा important word एक add हो गया, digital personal data. So primarily ये bill जो govern करता है, वो ऐसा data govern करता है जो digital form में. But yes, there are some exceptions to this as well. So this is the first thing for us to understand. और जो इसमें एक बहुत important चीज है, जो हम शुरुआत से पहले ही अभी समझ लें, this is an act to regulate dealing of personal data. Okay. Now, what is personal data? A data of an individual through which that individual can be identified. For example, my name along with my phone number. अगर दोनों details साथ में हुई, then only it will qualify as a personal data that can be regulated by this act. No other data. For example, chartered accountants, we do a lot of audit and all. उसमें कई सारे numbers आते हैं, data आता है. We are not concerned with that data. It has nothing to do with that. That's the preliminary understanding of the act. So हम ये समझेंगे ये act क्या regulate करता है. It regulates data related to an individual. अगर किसी कंपनी का डेटा हो, it is not covered within its ambit. अगर कोई और फाइनेंशियल किसी भी प्रकार का डेटा जिससे इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाए, तो भी इस एक्ट की परव्यू से बाहर है. बट इन इटसेल्फ, because it governs personal data, it is very significant. So with this context, let's start further. सबसे पहले हम अपने सबसे जरूरत की बात करेंगे कि ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में हमें इम्पैक्ट करता है. सो ब्रॉडली we have to understand it in 3 different capacities. Okay, what are those capacities? First of all, we are all individuals. We are all citizens of this beautiful country. Okay, as individuals, we have got certain rights, and as Puneet rightly pointed out, in Supreme Court's very important landmark verdict in in Puttaswamy's case, Supreme Court declared way back in 2017 that right of privacy is a fundamental right. अब right of privacy क्या होता है? Privacy एक बहुत बड़ा right, okay, एक बहुत ही बड़ा right है. उसका एक element है personal data, कि मेरा जो individual का personal data हो,
उसका right मेरे पास होना चाहिए. Okay, nobody should be able to take that data freely and do certain things with that data. That was declared by Supreme Court way back in 2017. उसका जो legal form है, उसका जो legal protection है, that has now finally come in the form of this act which we are discussing today. So as individual, हमारे क्या अधिकार है, हम क्या अपने डेटा को रिलेटेड कर सकते हैं, ये सबसे पहले जानना जरूरी है. एंड व्हाई आई प्लेस इंडिविजुअल एज इन द फोरफ्रंट, बिकॉज अगर हम ये समझ लेंगे, अगर लॉ को समझने के लिए ये कॉर्नर स्टोन जो है वो इंडिविजुअल के राइट से है, अगर हम ये समझ लेंगे देन एवरीथिंग एल्स will fall in place very swiftly. Okay, so first of all, let's understand this law from the point of view of individual, कि कैसे ये individuals का personal data protect करता है, कैसे उनको owner बनाता है अपने personal data का. So that is the first bracket that we have. Second, as businesses, what businesses do? We have taken example of Bajaj Finance, right? Puneet ji has given this example, and all chartered accountants are familiar with Bajaj Finance. हमें सभी को calls आ चुके हैं multiple times. All right. तो वो personal data कहीं ना कहीं से gather किया है. उनको ये पता चला कि ये श्रीमान और जो ये मैडम है, no, I have to say madam because ये law का I'm digressing here. Law का बहुत unique feature है. और ये ऐसा है कि हम अभी तक जितने भी लॉ देखते हैं मेल जेंडर ही से लिखते हैं. इस लॉ बहुत यूनिक है. एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रेफरेंस हैज बीन मेड विद शी, हर, एक्सेट्रा. तो जो बिजनेसेस हैं जो डेटा लेते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फोन करते हैं, उनके पास क्या डिटेल आई होगी? दे गॉट the name, phone number, as well as the status that this person is a chartered accountant. उस डिटेल के बेसिस पे उन्होंने कॉल किए होंगे, right? Now, don't know from where they got the data, but businesses have this data and they use this data for different purposes. So individuals, they lose control of the data. At the same time, it is processed by businesses. जैसे ही ये राइट इंडिविजुअल्स को दे दिया जाता है कि उनका डेटा लो, then corresponding obligation is there with businesses to comply with. Explain in simple terms. अभी की डेट में as individual have lot of personal data which is shared outside. उसका remote control हमारे हाथ में नहीं है. Now law simply एक चीज कर रहा है, and that is the crux of this law. The law is trying to bring remote control of personal data in the hands of the individual to whom this data belongs to. जो आपका personal data है, उसका control आपके हाथ में shift कर रहा है. वो उसी verdict की furtherance में है जिसमें Supreme Court ने कहा है कि आपका right of privacy एक fundamental right है. And because it is trying to do it, it is casting lot of obligations on business to deal with personal data of individuals in the manner the individual has permitted the business to use that. Okay, that is the key feature of this law. Now, after looking at the law from these two perspectives, let's also keep in mind there are a lot of professional opportunities. Okay, and should not think generally क्या होता है, एक मिसनॉमर है कि ये डिजिटल लॉ है, ये उन लोगों के लिए है जो आईटी बैकग्राउंड से है. नो, आई एम आल्सो नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड एंड वी हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन दिस एरिया. और लॉ तो अभी आया ही है, एंड देयर इज enough opportunity for each and every professional, be it chartered accountant, be it lawyer, to work in this area. I'll explain what are those opportunities. Because ये law businesses को oblige करता है डेटा एक particular manner में deal करने के लिए, and we'll also see what are the other regulatory requirements for businesses to appoint certain officers, to carry out certain audits, to map all the data they collect. I feel that professionals like chartered accountants, lawyers are very well equipped already to take up this opportunity. And I say in a lot of conversations, and I've spoken on other forums, and I always said this,
for us as professionals, this is an opportunity like Y2K was there for IT people. Each and every person in the country collects some data. So imagine all organizations that collect data, they will have to be compliant with this law. इसके जो previous versions थे law के, उसमें एक small data processors का exception था जो यहाँ पर नहीं रखा गया. What does it mean? That government wants to apply this law in the hands of each and every individual, each and every person who collects the data. Okay, be it an individual or any other person. कुछ limited exceptions हैं जो हम देखेंगे, but that is the context. It has got a very wide applicability, and I can say with reasonable confidence that several companies, several organizations, persons will need some sort of support to comply with this law. And from where will that support come from? We will have to augment our skills in order to provide them that support. So let's also keep in mind the professional opportunity which are going to come to professionals like us in the area of this law. So that's the next context which I wanted to give before we actually dwell into how the law has developed over a period. So what is the need for personal data protection law? Why it is needed? Okay, I've given some context, but let's look into this in more detail. Okay, let's put it into perspective. आज की तारीख में क्या होता है? We as individuals, we share voluntarily a lot of personal data. Okay, all of us are doing this webinar online. तो उसमें वेबिनार में जो होस्ट है, जो IT होस्ट है, यहाँ पर Zoom है, what all they can gather by this data? They can gather that we are all coming from some professional background. We have interest in this topic. They know our email ID. They also know our name. So we have voluntarily shared them these details. So day to day हम देखते हैं हम कितने सारे ऐप यूज करते हैं, कितनी सारी ब्राउजिंग करते हैं. वहां पर हम voluntarily, we are Indians as such, we have, you know, हमारे यहाँ पे प्राइवेसी का एक बड़ा ही लिबरल फॉर्म चलता है. हमारे यहाँ पे पड़ोसी को भी पता होता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है. That is the trend we have normally. This is our culture. There's nothing wrong about it. This is our culture. Okay. यूरोप में अगर जाएंगे तो उनको अमेरिका में पूछ लेंगे किसी की एज क्या है तो ऑफेंस हो जाएगा उसके लिए कि मेरी एज कैसे पूछ ली. हमारे यहाँ हमें एक तरह से लिबर्टी, हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं. Nobody will get offended. That is the beauty of harmony or culture in our country. So we are generally very liberal. So because we are liberal, we don't mind sharing all these details. So voluntarily we keep sharing name, date of birth, address, phone number, email, our Aadhaar card and other government IDs, our health data as well, financial data, biometric data also. अब हमारे में से कितने लोग होंगे जो DLF की बिल्डिंग में जाते हैं साइबर सिटी में, and where they call for the image, right, for allowing the entry. या फिर आप चायोस में भी जाएंगे तो there you can see two options are given to order a tea. Either you can log in through your face or your phone number. तो क्या face कैसे है? क्योंकि आपने कभी ना कभी आपकी बायोमेट्रिक डिटेल दे दी होगी, right? That is why they capture and match your face and allow you the entry. और डिजी यात्रा में भी हम ऐसे ही करते हैं. We have given some sort of biometric data to them so that they can allow us access. So voluntarily we keep sharing for ease of doing things for several other purposes. एक सिंपल आप Amazon पे ट्रांजेक्शन कर लें, उसमें imagine how much data we give. उसमें हम नेम देते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, राइट, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देते हैं, अपना ईमेल आईडी देते हैं, फाइन. और ये मालूम पड़ सकता है कि हमारी क्या प्रेफरेंस है. अगर हम रेगुलरली कुछ ऐसे कपड़े ऑर्डर कर रहे हैं जो इन्फेंट्स के लिए, तो दे माइट नो दैट वी हैव गॉट इन्फेंट एट होम. सो दिस इज ऑल वी डू voluntarily, and on the basis of this, because of the technological development, few things can be done by system. We all randomly get these notices about cookies, right? जब भी हम कोई वेबसाइट सर्फिंग करते हैं, कुकीज का नोटिफिकेशन आता है और हमेशा हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं. बट हमें जनरली ये जानकारी नहीं होती है कि वो कुकीज क्या करती है. सो देयर आर दीज सॉर्ट ऑफ कुकीज व्हिच आर known as cookies, but they are software programs.
वो ये पता कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, आप किस डिवाइस से ब्राउज कर रहे हैं, आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, whether Chrome or any other Safari or any other browser, which browser are you using. They can also track your web footprint, कि आप किस किस साइट्स पे जा रहे हैं, उसमें कितना समय व्यतीत कर रहे हैं. All of this can be mapped. And apart from these things, there are also these viruses, spywares, which can extract a lot of personal data while you are surfing on some other site. और ये सब करने के बाद आप जब voluntarily किसी organization को data देते हैं, so there are these data breach incidences which we keep coming across. अभी थोड़े दिन पहले एम्स में एक data breach हो गया था, वहां पर पेशेंट्स का डेटा किसी ने हैक करके डाउनलोड कर लिया था. एयर इंडिया में थोड़े दिन पहले ब्रीच हुआ था, वहां पर फ्लायर्स की डिटेल, उनके क्या नेम है, कितनी फ्लाइट्स उन्होंने ली है, क्या उनका मेंबरशिप आईडी है, ऑल ऑफ दैट वाज टेकन. ओके, सो वन माइट थिंक कि क्या फर्क पड़ता है, आई मीन हाउ डज इट मैटर टू मी. अगर कोई लेता है मेरा डेटा तो ले ले, इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट मी. बट वी कीप हियरिंग दिस थिंग that data is the new oil, it is the new gold. Why it is so? ऐसा क्या है डेटा में जिससे किसी का कुछ एडवांटेज हो जाएगा या मेरा डिसएडवांटेज हो जाएगा? So there are a lot of things which we have to imagine, which you have to not imagine, keep in mind that can be done with this data. And there are several incidences how the data has been manipulated. So let's look at that part as well. Whatever this data is, it is used by data aggregators. आप bits and pieces में कई सारे apps, कई सारे government services, कई सारे private digital websites के through आप data share करते हैं. There is a very organized industry globally that collects this data from various such players. Okay, various such players. What do they do with such data? They do profiling. So this is an individual who has got this data and then they do profiling. Today only, somebody told me very specifically कि भारत में 120 करोड़ लोग में से 52 करोड़ लोगों का प्रॉपर प्रोफाइल डार्क वेब पर अवेलेबल है. इमेजिन such a big population, उनका पूरा प्रोफाइल क्या, उनका क्या प्रेफरेंस है. दिस इज सिंपल. क्या वो खरीद रहे हैं, क्या उनकी लाइकिंग है, ओके, कितना वैल्यू का सामान खरीद रहे हैं, किस तरह का सामान खरीद रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज ले रहे हैं. जैसा कि हमने देखा बजाज फाइनेंस के केस में, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, किस तरह का उनका बिजनेस है. दिस इज ऑल called as profile. So they create this profile. A profile can be for consumer preference, which can be used for marketing purpose. It can be for financial capabilities to offer loans and services. Beyond this, there are several other uses also. What is the political preference of a particular person? वो कितना, let's say, rightist है या leftist है? Going through the data, somebody can tell by doing a profiling. फेसबुक पे कौन सी चीज लाइक करता है, कौन सी नहीं करता है, किस तरह के कमेंट करता है, इंस्टा पे कौन से पेजेस, कौन सी रील्स फॉलो करता है, फ्रीक्वेंटली देखता है. ऑल ऑफ दिस कैन बी यूज्ड फॉर एनालिटिक्स. डेटा एनालिटिक्स इज अ बिग इंडस्ट्री. व्हाट डू दे डू? दे क्रिएट प्रोफाइल. ऑल्सो इट कैन एक्सटेंड टू रिलीजियस ओपिनियन. एंड व्हाट डू दे डू विद प्रोफाइल? नाउ यू विल गेट अ पर्सपेक्टिव. Marketing is of course one simple thing which we keep coming across. Every day I get 7-8 phone calls for various purposes, चाहे loan ले लो, चाहे real estate. I don't know from where do they get the details, but they keep calling me. They know that I am in Delhi or Gurgaon, and these are my preferences. और कई बार बड़ी targeted calls होती हैं. So marketing is one purpose. Okay, it may not bother me क्योंकि हो सकता है मुझे वो चीज की requirement हो, but there are other things also which may not be liked by me, and financial fraud is very common out of those. I went for launching a complaint in Gurgaon, one of the cyber police stations. Gurgaon में अभी, as far as I know, there are 3 cyber police stations. Delhi में भी कई सारे हैं. Delhi cyber cell is much more advanced. Gurgaon cyber cell में एक police station में we were there to lodge a complaint, and I was told by the constable who was handling the complaint
कि सर हमारे पास 50 ऐसी कंप्लेंट आती है डेली. So imagine one city in the country having 3 cyber police stations. वहां पर रोज की 50 फाइनेंशियल फ्रॉड्स की कंप्लेन आ रही है. सो कितना बड़ा ये नंबर होगा. ओके, इट्स रनिंग इन करोड्स, मल्टीपल करोड्स फाइनेंशियल फ्रॉड, एंड इट इज ऑल डन बेसिस द डेटा. इस बंदे का ये बैंक अकाउंट है, ये फोन नंबर है, ये ईमेल आईडी है, इसको इस तरह से अप्रोच करो so that financial fraud can be committed. Then political influences, and it is very serious. I am sure most of you would have heard about Cambridge Analytica. अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो quickly, weekend is coming. There is a beautiful series on Netflix on this Cambridge Analytica. What did they do? They influenced one US president's election. US president's election. On what basis? On the basis of profiling of several voters in different constituencies, and it is claimed, as well as it is the case filed against this particular company, that on account of the profiling created by them, one particular candidate won the election. You can imagine how serious it can be. Second example is Brexit. Brexit would not have happened without proper profiling and targeting individuals with a specific form of content that is being claimed by several agencies, government agencies, not individuals, not bloggers, agencies. It can be so serious. We see a lot of Reuters and all around us. And जैसे ही रॉइट होता है, सबसे पहले क्या होता है, व्हाट्सएप बैन होता है, ये कुछ बैन होता है, इंटरनेट डाउन होता है. व्हाई? Because it is known to people who want to create unrest that if we feed individuals who are fence sitters or who are, let's say, volatile with certain images or text or messages, then it can provoke riots. So there are anti-social, anti-national purposes. You can imagine how serious this is. And that's why, apart from the individual context तो एक जरूरी है, इंडिविजुअल्स को डेटा का अधिकार देना जरूरी है, बट इवन इन नेशनल इंटरेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन. इट हैज गॉट अ फ्रेमवर्क कि किस तरह से डेटा डील होगा, कहाँ रेगुलेट होगा, बिकॉज इट हैज गॉट दीज डीपर कॉन्सिक्वेंसेस. सो आई एम श्योर you will now understand why this piece of law is very important. Fourth bracket जो मैंने नहीं लिखा था वो है nation. Why it is very equally important for the nation. Apart from important from us in our individual capacities, in our professional capacities, and also for businesses to whom we support or we work with. This is the importance of this piece of legislation. Now, having set the context, let's come back and see how it has progressed over a period of time. 2017, Supreme Court declared in Puttaswamy's judgment that right of privacy is a fundamental right. Okay, but having declared this as a fundamental right, there was no legislation. अब legislation coded नहीं होने से हर कोई व्यक्ति writ तो नहीं फाइल कर सकता कोर्ट में जाके कि मेरा प्राइवेसी का राइट ब्रीच हो रहा है. Now that we have this law in place, it becomes easier for people to defend their right. And as I said in the beginning, right of privacy is a larger right. Privacy का right है, वो मेरी body privacy का भी right हो सकता है, वो मेरी data privacy का भी right हो सकता है, उसमें और कुछ तरह की privacy rights भी आते हैं. Here, this law is concerning privacy of personal data in digital form. A subset, if the privacy right is a bouquet, this is a subset, but very important. Basis this judgment, Sri Krishna Committee was constituted, जिसको ये responsibility दी गई थी कि आप इस law का प्रारूप तैयार करें. They did it, and as a result of that, Personal Data Protection Bill 2018 was introduced in the Parliament. But after some time, it was found out that this bill has got a lot of other implications, so it was withdrawn. And in 2019, another bill called as Personal Data Protection Bill 2019 was introduced. इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रेफर कर दिया गया, जेपीसी के पास. जेपीसी took its own time
to come up with a recommendation, and they came up with more than 100 amendments in the bill. Because of many amendments, the government had withdrawn the bill, और इन्होंने एक December 2022 में एक नया bill for consultation introduce किया, which has seen light of the day. And now, as a result of all this exercise, we have the Digital Personal Data Protection Act 2023, which is referred to as DPDPA in this presentation. So that's the journey, the long and short journey of this act. We should also keep in mind कि काफी सारे advanced countries में, Europe में, there is a similar bill which is called as General Data Protection Regulation, GDPR, which came in 2018, 2019, around that time, almost 4 or 5 years ago. That is the golden standard globally. उस law के basis पे कई सारे laws formulate हुए हैं, but there have been certain problems in that law as well. ऐसा माना जाता है कि इंडिया का हमारा जो version है, it is addressing those problems which are there in its European counterpart. And that's the reason why already a few countries have said that it is the new golden standard for data privacy. Formally, statements have been made, I think, by New Zealand and one more country, that they are closely monitoring the progress of this law, and they may follow the pursuit in their own country. So it's a landmark legislation already, on which world has got a lot of interest. Let's dwell further to understand the law. Broadly, अगर हमें law को समझना है, तो let's understand its 3 key pillars. Okay, 3 key pillars. ये ऐसे pillars हैं जिस पे पूरा law based है. What are these? और ये ऐसी terms हैं जो law में कई बार use की गई हैं, जो मेरे presentation में भी आपको मिलेगी कई बार. So let's understand these terms. What are these terms? Data fiduciary, data processor, data controller. Okay, these are 3 important terms. Fiduciary, processor, controller. Data fiduciary, जैसा कि हम देखते हैं, directors are fiduciary, right? It is the same term. He is the custodian or the trustee of the data. जो भी person data collect करता है, that person is termed as data fiduciary. Any person who alone or in conjunction with other persons determines the purpose and means of processing of personal data. Personal data का क्या किया जाएगा, किस तरह से यूज किया जाएगा, जो भी ऐसा व्यक्ति है, he or she who collects, or the company that collects the data is the fiduciary. And all the responsibilities for data fiduciary, there are many responsibilities on data fiduciary under this law, which we'll see in subsequent slides. Data principal, he is the individual to whom the data belongs. If I am the individual, I am the principal. Okay, individual to whom the data belongs. And data processor ऐसा व्यक्ति है जिसको data subsequently transfer कर दिया जाता है fiduciary के द्वारा. If you are, let's say, auditing a company, auditing a bank that has got a lot of personal data of account holders. Now the bank will share this data with you for you to perform the audit. So bank is the fiduciary and you are the processor. अगर fiduciary processor को data देता है, then there are obligations for fiduciary as well as the processor. So we'll see what are those obligations, what are the requirements between the fiduciary and the processor. Okay, that we'll see. But these are the 3 key terms: data fiduciary, data principal, and data processor. So what is the applicability of law? Now, over a time and again, we see कि इसका कितना applicability है. It has got territorial plus little extraterritorial obligations. Extraterritorial meaning, अगर data बाहर जाता है इंडिया के, तो हो सकता है इस लॉ की रिक्वायरमेंट भी डेटा के साथ ट्रैवल करे. Anybody who is dealing with data, personal data of individuals in India, if that processing is done outside India, then the law will also be applicable to that particular person, irrespective of the fact that that person is in India or not. Let's look at it in detail. Application in India, it applies to processing of personal data, digital personal data within the territory of India, where personal data is collected in digital form. So as I said in the beginning, in digital personal data को govern करता है, but there is one more element to it. Personal data is collected physically and then digitized. आप employees का personal data physically collect करते हैं, उनका आधार डिटेल पेपर फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, उनका बैंक अकाउंट
number किसी form में collect करते हैं and then you convert it into digital form, then also you will be subject to this law. So it is digital plus physical information converted digitally. On all this processing, this law is applicable. अब ये word processing काफी बार आ रहा है. We'll see what is processing. Processing is very wide. It means you do anything with the data. अगर आप simply data एक pen drive में लेके store कर लेते हैं अपने पास, even that is processing. Processing does not mean, it's not just a verb कि उस पे कुछ आपको data को आपको कुछ उसमें changes करना है. That is not the meaning in the law. जो common meaning processing का है यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर है आप डेटा को किसी फॉर्म में रखते हैं, एक्सेस करते हैं, स्टोर भी कर लेते हैं. Then also you are subjected to the law. So now you can imagine how far is the implication of this law. Let's also look at extraterritorial applicability. It also applies to the processing of digital personal data outside India, where processing is related to offering goods or services to individuals in India. We all know we use several cloud services, चाहे वो Google Cloud हो, चाहे Apple हो, चाहे Amazon cloud service हो. All of those cloud services have servers outside India. They may not have servers only in India where the data is stored, right? वो सर्वर किसी भी जगह हो सकते हैं. वो कैलिफोर्निया के किसी एक रिमोट कंट्रोल लोकेशन में भी हो सकते हैं. वो ऑस्ट्रेलिया के किसी विलेज में से भी हो सकते हैं. Okay, so wherever that data is stored and it is related to offering services, storage services भी हो, then also that company which is storing the data outside India is also subjected to the provisions of this law. And now, if I can put it into perspective, because it has got extraterritorial applications, if in India somebody is processing data, let's say there is a call center of an airline in India, where it gets a lot of data of several flyers who are located in different countries. और वहां पर भी ऐसा कोई कानून हो, काफी जगह ऑलरेडी डेटा प्रोटेक्शन लॉ इनेक्ट हो गया ग्लोबली, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस कंपनी को कितने लॉ से कंप्लाई करना पड़ेगा, व्हिच इज द फैक्ट ऑफ द मैटर. So here, if I give some context, it is sort of double taxation avoidance agreement. तो countries के बीच में, because they have this kind of law in several countries, एक दूसरे के यहाँ डेटा ट्रांसफर करने के लिए there is an adequacy norm which is followed. Adequacy norm, that is the term. What is that adequacy norm? अगर एक कंट्री का डेटा दूसरी कंट्री में जाता है, वहां पे इस तरह का लॉ है, then they consider to be adequate. अगर वहां का लॉ उनके सिटीजन्स का डेटा प्रोटेक्ट करता है, it is considered to be adequate. In those cases there are less compliances. But ऐसे किसी jurisdiction में जा रहा हूँ जहां पे उनका खुद का लॉ नहीं है, then one has to be extra careful while transferring the data to a person located in a country that has not got equal law. These kind of things will get more clarified when the regulations are released. Abhi tak law aaya hai, but regulations are anticipated. We'll have more such details on the regulation part, on the extraterritorial part. There are certain exceptions to this. What are those exceptions? ये law कब नहीं apply करेगा? Personal data that is processed for any personal or domestic use. आपके यहाँ पे कोई let's say there is a domestic help or there is a worker who is supporting you. If you take personal data, then only in that situation you are not bound by that law. Else you will be subjected to that law. And personal data that is made publicly available. And there is an example given in the law. एक person blogger है जो कई सारे ब्लॉग में अपनी डिटेल्स दे देता है खुद से voluntarily. So he has made his personal data available publicly. Then anybody collecting that data is not subjected to. But you can imagine, you can anticipate that these are very small limitations. Otherwise, the law has got a very extensive application. And that is the reason why I said in the beginning that each and every business profession or other people, organizations in the country, in some manner, they will be collecting data and they will all be subjected to this law. Even a factory for that matter. Factory में भी क्या हो रहा है? वो कहेंगे हम तो goods बनाते हैं. We don't keep any data. We only sell it to businesses. But आपके employees तो हैं. उन employees का आप social security number, उन employees का bank details,
उन एम्प्लॉइज का एड्रेस, नेम, फोन नंबर, ईमेल, डिग्रीज, वो सब ले रहे हैं. All of that is personal data. Even if you are collecting physically and keeping it in the digital form in your records, then also what this law is applicable, and you have to put all the mechanisms in place that we are going to discuss in subsequent slides. These will be the obligations for each and every person handling data, personal data of individuals. So let's move forward. I'm also keeping an eye on the time. I hope till the time we are fine. So now let's look at the requirements. We have already seen the context. Ab exact kya requirements hai law mein that we are going to see. How the data has to be dealt with. Individuals ke kya right hai. Data fiduciaries ke kya obligations hai. We will see now. So there is this simple concept of consent and notice. First of all, the law says personal data can only be processed for lawful purpose provided data principal has given consent. Data principal की सहमति के बिना उसके personal data से कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता. That is the blanket wall drawn under the law. I can see a few questions and answers and also chat. What I'll do is that there may be a situation whereby I'm already covering these during the presentation. So if you allow me, I'll take all these questions one by one towards the end. I am sure that this is a topic which will give a lot of questions for sure. Yes, yes. So That is how you will will. Yes, yes. all right. So ऐसे ही करते हैं. Towards the end, we'll address each and every question. Keep around 20 minutes. You can keep posting in the chat box. 15 minute हैं करीब 15-20 मिनट. Okay. All right. So personal data can only be processed for lawful purpose provided consent has been given. ये उसी तरह की consent है जैसे हम contract act में देखते हैं foreign agreement, right? Consent and offer and acceptance. This is the consent. Only if data principal has given the consent, then only you can process the data. Let's see further. Consent must be free, specific, informed, and unambiguous. So वही जो offer जैसी देखते हैं contract में, it must be free, clear, etc. That is the principle. Something similar applicable to consent. ऐसे ambiguous consent. Yes, there is a consent which you give to handle your data, to collect the data. Data fiduciary must give notice. Consent के बाद में जो person data collect कर रहा है उसको data fiduciary को principal को बताना पड़ेगा, individual को बताना पड़ेगा कि उसके data से क्या करेगा, किसको वो data forward करेगा, उस data को कितने दिन रखेगा, कैसे use करेगा. Now, when we see web browsing we do, उसमें एक प्राइवेसी पॉलिसी आता है. हमने शायद रेयरली कभी वो खोल के प्राइवेसी पॉलिसी देखा होगा. ये हम वेबसाइट बनाते हैं तो डेवलपर को कहते हैं किसी और वेबसाइट से कॉपी कर लो, बट उसमें क्या होता है, उसमें सारी कंसेंट्स बिल्ट इन होती है. अब वो कॉपी करने वाला जो सिस्टम है वो शायद अब मुझे डाउट है कि चल पाएगा, बिकॉज पीपल विल हैव टू टेलर मेड दिस थिंग कि क्या डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसकी क्या पॉलिसी बना है. पीपल विल हैव टू राइट दिस पॉलिसी एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस. डिपेंडिंग ऑन द डेट we write the policy. Based, I doubt. We tell you, they only and only do or expertise in cookie policy. अब हम cookies तो ऐसे accept कर लेते हैं, हमें जानकारी भी नहीं होती cookies की क्या क्या capability होती है. But because GDPR, the counterpart of this law in Europe is so strict, वहाँ पर penalties can go up to 4% of global turnover of an organization if they breach with the provisions of the law. जो हमारे यहाँ 2019 में एक्ट आया था उसमें 2% penalty थी if there is a breach, 2% of the global turnover if there is a breach of some of the provisions of the law. Now it is capped, but still it is very high. We'll look at those penalties, क्या consequences are later. What I'm trying to point out here is that those all things, those all policies, those all procedures, those all users' terms and conditions will have to be very strict now so that people can get consent in a proper form. So that is what is required under the law. The data principal shall have right to withdraw the consent.
अगर कंसेंट देने के बाद में विड्रॉ कर लिया, then the person who has collected the data has to erase that data, has to stop sharing that data. If he has shared, then is to return the data as well. Those are the requirements under the law. So as I said in the beginning, remote control of the data is given back to the individual to whom this data belongs to. And these are the provisions for enabling that remote control. Okay. आज आप नेटफ्लिक्स में देखते हैं, जो मूवी ब्राउजिंग है, जो आप उसको इरेज कर सकते हैं, बट नेटफ्लिक्स के पास वो डेटा रहेगा, करेक्ट? बट दिस लॉ विल इनेबल दैट इरेजर. आप उसको कमांड कर सकते हैं दैट यू इरेज दिस डेटा. देयर वाज सम इंटरेस्टिंग केस लॉ few months ago. एक स्टूडेंट था लॉ कॉलेज यूएस में, he wanted to take admission, but the college was not giving the admission because when on Google search they found out that a criminal case was initiated against that person. और उस criminal case में inquiry हुई and that person was found acquitted or not found guilty. Then the person approached the High Court and said, Delhi High Court, and said, if the court has found me not guilty because of Google, my career is getting impacted. So please direct Google to erase that search, erase that database from their search, erase that information from their search database, because it is adversely impacting my right to take admission. It is adversely impacting my right to privacy. And court intervened and said, yes, Google has to erase. But कितने लोग Google के पास कोर्ट के पास जा पाएंगे ऐसी चीज करवाने के लिए? Here the law says that the person who has collected the data will create a mechanism जहां पर data इंडिविजुअल का डेटा है, वो अगर इरेज कराना चाहे तो आपको मैकेनिज्म बिल्ट इन करना पड़ेगा कि आप इरेज कर दें. सो दीज आर द आईटी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दैट बिजनेसेस विल हैव टू डू. बट गजेंद्र जी, और they are calling it right to be forgotten, right? Right to be forgotten. Yes, it's an important term. Right, thank you for pointing this out. Right to be forgotten is an important concept within this right. कि आप मेरा डेटा इरेज करो, I should be forgotten. This is very relevant and important for many people. And consent can be given, managed, reviewed through a consent manager. This is a very unique concept, a consent manager. अब आप, हमें तकलीफ होती है हर साइट पे जाके कुकीज पॉलिसी चेक करके एक एक कुकीज की प्रेफरेंस सेट करना. व्हाट डू वी डू बाय डिफॉल्ट? वी एक्सेप्ट ऑल द कुकीज. यही हम करते हैं. तो ऐसा नहीं करने के लिए एक इंडियन लॉ में बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है कंसेंट मैनेजर का, कि आप एक वेब पोर्टल होगा या एप्लीकेशन होगा, उस पर अपनी कंसेंट प्रेफरेंस दे देंगे और जहां भी जाते हैं उसके थ्रू आपकी कंसेंट ड्रॉ होगी. दिस हैज टू इवॉल्व, बट देयर इज दिस कॉन्सेप्ट व्हिच इज वेरी यूनिक इन इंडियन लॉ, कंसेंट मैनेजर. ये इसके लिए क्रिएट किया गया ताकि आपको बार बार डिफरेंट कंसेंट नहीं लेने पड़े. देखिए, ऐसा हो सकता है आप पहली बार इस डिटेल में इस लॉ को देख रहे हैं तो कई सारे वर्ड्स आपके पास नए होंगे. सो हमारा लर्निंग का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि वी गेट एन ओरिएंटेशन. अब अगली बार जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कंसेंट मैनेजर का, यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ इट इज गोइंग टू इवॉल्व इन फ्यूचर. वी हैव सीन कि डेटा सिर्फ कंसेंट के द्वारा ही प्रोसेस हो सकता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जहां कंसेंट जरूरी नहीं है और डेटा उसका यूज किया जा सके. इसका एक सिंपल एग्जांपल है इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी. अब वो मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे नहीं होगा कि फॉर्म भरो, डेटा प्राइवेसी लॉ में लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने के बाद कंसेंट लेने के बाद ही मैं ट्रीटमेंट करूंगा. इफ देयर आर दोस काइंड ऑफ केसेस, देन कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड दीस sort of things are not there in several other laws, and that is why people are saying that this law has thought through the other consequences, challenges of similar law in other jurisdictions and try to address those challenges. So ये जो example है जब बिना consent के data process हो सकता है for taking provide medical treatment, for employment purposes, intellectual property purposes. If government wants to give subsidy, वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रिमोट विलेज में जो एकदम ही इलिटरेट पर्सन है जिसको सब्सिडी जाने उसकी कंसेंट नहीं मिल रही तो सब्सिडी नहीं दे रहे. Those are legitimate uses which have been well thought, and these are the exceptions where data can be processed without a consent. Consent manager we have talked about. This is the concept whereby a central database will be created, operated by people who are registered with the board that will be created under this law. और उस सेंट्रल बेसिस पे APIs आई थिंक कॉल करेंगे हर वेब ब्राउजर एप्लीकेशन. उसमें जो कंसेंट होगी उसके बेसिस पे यू विल नॉट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन. जो आपने मास्टर कंसेंट दे दी है
उसके बेसिस पे आपका डेटा गवर्न होगा. दैट इज द वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग डन अंडर दिस लॉ. राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स, उसके कई सारे और अधिकार हैं. राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल डेटा. आपने मेरे पर्सनल डेटा का क्या किया, किस किस को से शेयर किया, उसका कितना यूज किया है, that is the right that I have. Again, the remote control thing. Just keep that in mind so that we better understand, quickly understand these rights. Right to correction and erasure of personal data. Today, somebody collects the data. I don't have any right of getting it corrected. अगर किसी ने मेरी date of birth गलत डाल दी है, I can keep fighting, but I cannot correct it. I found this very challenging. एक IRCTC में कुछ detail गलत हो गई थी. For a long period, I wasn't able to book the tickets. So this is the right which is given. These are also very important rights. Right of grievance redressal. Each and every organization collecting personal data will have to appoint a grievance officer. That grievance officer may be an employee or may not be an employee of that person. And please bear in mind, क्योंकि ये data extra territorial है, जो बाहर भी डेटा कलेक्टर्स हैं, उनको भी ऐसी रिक्वायरमेंट है. इफ दे फॉल इन पर्टिकुलर कैटेगरी, दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया टू एड्रेस दीज ग्रीवेंसेस, टू रिप्रेजेंट देम बिफोर द गवर्नमेंट. विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स आल्सो इन शॉर्ट टाइम नाउ. सो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर इज इंपॉर्टेंट for handling these grievances. These functions have to be created. Somebody has to design the policy and lay out the procedure for which grievance can be handled. Right to nominate. Now, एक बहुत बड़ा एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है. एक पर्सन जिसका डेटा इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है और कई जगह है. What will happen if that person passes away? Okay. For all these things, जैसा कि बैंक में नॉमिनेशन होता है, somebody can nominate a person. ये मेरा लीगल हेयर है फॉर डेटा. दिस इज ऑल्सो थॉट ऑफ इन द लॉ एंड दीज आर वेरी वैल्यूएबल थिंग्स. अगर किसी का पेज है जिसमें कई सारे फॉलोअर्स हैं एंड ही इज अर्निंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट एंड इट्स वेरी कॉमन दीज डेज, यू ऑल नो दैट. उसके बाद में क्या होगा? सो द पर्सन कैन नॉमिनेट समबडी दैट आफ्टर हिज डेथ दिस पर्सन विल बी द सक्सेसर. दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर द लॉ. Obligations of data fiduciary, will quickly look. There are many obligations of fiduciary, those who collect data. जिस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट किया है उसी पर्पस के लिए प्रोसेस करें. ज्यादा डेटा नहीं लें. वी गो टू रेस्टोरेंट्स, वी सी वो डेट ऑफ बर्थ मांग लेते हैं. वी गो टू सैलून्स, वो कहते हैं फोन नंबर क्या है. अभी बाल काटने के लिए फोन नंबर कहाँ चाहिए? सो द लॉ मैंडेट्स दैट यू विल नॉट कलेक्ट अननेसेसरीली पर्सनल डेटा विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज. जो डेटा लें उनका एक्यूरेट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ग्रीवेंस ऑफिसर्स की. डेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा सिक्योर्ड करके रखें. टुडे इन इंडिया several data breaches are happening but nobody reports. But the law mandates that it has to be stored in a secured manner, and whenever there is a breach you have to report it. If you don't report, there are severe financial consequences we will see. Breach has to be reported. Retention, you cannot keep data forever. अभी हमारी क्या पॉलिसी है? डेटा आ गया है तो रख लो. हाउ डज इट मैटर? कभी यूज हो जाएगा फ्यूचर में? नो, दैट विल नॉट बी अलाउड. देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस. अगर डेटा आपने यूज किया है, दे हैव गिवन एग्जांपल ऑफ कार. अगर एक कार कंपनी जो जिसके थ्रू आपने कार सेल की है, कार सेल होने के बाद में वो आपका पर्सनल डेटा डिलीट करेंगे. यू नॉट कीप गेटिंग कॉल्स कि आपको कार बेचनी है, खरीदनी है, क्या करना है. The purpose is over, so you have to delete the data. So these are all principles. See, these are all principles, but these are important principles, and there is a board which will foresee these principles. अगर principles पे complain हो सकती है तो individual company में complain कर सकता है. अगर वो resolve नहीं हुई, then it can file complaint to the board. But these are very important principles. So likewise, processing grievance, these are the important elements, obligations of data fiduciaries. Let's move further. This is very talked about topic. What will happen to data of children? Strict provisions. Children is defined as a person less than 18 years of age. The age whereby we consider that person as adult for several purposes under different laws. उन cases में there is strict prohibition. उनकी आप processing नहीं करेंगे, उनकी profiling नहीं करेंगे, उनकी targeting नहीं करेंगे, behavior को monitoring नहीं करेंगे. There is absolute blackout envisaged under the law.
और उनके डेटा की परमिशन वो बच्चे नहीं देंगे, उनके पेरेंट्स देंगे. Now all these mechanisms have to be built in by various games, by various educational apps जो कि ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं. Schools, imagine how big is the this workload for a school to comply with this law. Educational institutions. So this has got a lot of, this will change the mindset how the data is dealt with. Okay, specific provisions related to children. Now, a very important concept of significant data fiduciary, और इस concept जो भी person जिसको सरकार declare करेगी significant data fiduciary basis these parameters which you see in front of you, उसके लिए extra obligations है. वो क्या extra obligations है वो हम देखेंगे, but those are very important obligations. तो volume kind of data that handle, तो जैसे Twitter, Facebook, Amazon, इस तरह के लोग हैं जो बहुत सारा डेटा हैंडल करते हैं. WhatsApp, वो आप इमेजिन करते हैं उस तरह के लोग डेटा सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी में आ जाएंगे. या फिर जो मेडिकल डेटा हैंडल करते हैं, जो लोगों का बहुत बल्क फाइनेंशियल डेटा हैंडल करते हैं, दे विल ऑल बी, यू कैन इमेजिन, टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी basis these parameters. Now let's look at what are they obliged to do, because there lies a lot of professional opportunities for all of us. There are three things that these significant data fiduciaries will have to do. They have to mandatorily appoint DPO, Data Protection Officer. ये terms से आप वाकिफ हो जाइए. DPO, it is going to come again and again in several newspapers, in several discussions. Once this bill evolves more, as in when it is notified. अभी तक bill notify नहीं हुआ है. Government has power to notify different sections at different point in time. In certain interviews, the ministers, the senior people have indicated that they will implement it in 6 months to 12 months in a phased manner. So जैसे जैसे ये evolve होगा, implementation होगा, you will see this here, this word more, DPO. And DPO can be an officer of the company or can be outsiders. In Europe, in several other jurisdictions, there are these similar provisions. और कुछ लोगों का career ही DPO बनना है. The role and responsibility of DPO is to make sure कि वो सब law से comply कर रहे हैं. So, and the company has to facilitate DPO in performing its duty. एक designated person है जिसकी responsibility है कि वो सब compliance से compliance करेगा. There has to be independent data auditor. Imagine the opportunity, right? We have done, some of us have done these kind of courses, DISA and all, right? That is system security. This is internal data audit for the purpose of compliance with this law, which is mandatory in these type of organizations, which will be termed as significant data fiduciaries. And India, because of the IT progression, will have many significant data fiduciaries. Undertake data protection impact assessment and periodic audit, mandatory. These are very strict compliances, and if they don't do, then there are strict penalties. Huge financial penalties can be there. Transfer of personal data has been a very prominent topic in this law. यहाँ पर ये लॉ पिछले अपने वर्जन से लिबरल है. यहाँ पर कोई क्रिटिकल पर्सनल डेटा, सिग्निफिकेंट पर्सनल डेटा की डेफिनेशन नहीं है जो कि प्रीवियस वर्जन्स में थी. यहाँ पर ट्रांसफर अलाउ किया गया, बट द गवर्नमेंट हैज बीन गिवन पावर टू रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ डेटा टू स्पेसिफिक कंट्रीज. तो ऐसी कई एनिमी कंट्री है, वहां पर ऐसा एंटिसिपेटेड है, वो ट्रांसफर डेटा बैन कर देंगे. सो ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस दैट कलेक्ट डेटा, पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया, दे विल हैव टू एंश्योर कि किस कंट्री में उनका सर्वर नहीं हो जो डिक्लेयर करे गवर्नमेंट की यहाँ पर इंडियंस का पर्सनल डेटा नहीं जाना चाहिए. ओके, डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट जो बहुत टॉक्ड अबाउट टॉपिक था बिजनेस की तरफ से, इंडिविजुअल्स की तरफ से, दोज रिक्वायरमेंट्स आर नॉट देयर अंडर दिस लॉ. It is good in a way because data is so fluid that it is transferred across different jurisdictions. Now there is this board. Enforcement कैसे होगा? There will be a board, body created. जैसे कि CBIC, CBEC, TRAI body है, ऐसे डेटा competition commission है. इस तरह से एक board create होगा जो इसका enforcement देखेगा. It is vested with the powers to impose penalties, to carry out investigations, inquiries. It can do it on its own or on complaint filed by individuals. जैसे हम देखते हैं एंटी प्रॉफिटिंग में भी
वो खुद भी कर सकते हैं, कंप्लेंट्स पे भी एक्ट कर सकते हैं. It is in similar manner, it will be regulated. This is a comparison, we can circulate this. Those who are more interested कि कैलिफोर्निया में, अमेरिका में फेडरल कानून नहीं है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, हर स्टेट का अपना कानून है. CCPA कैलिफोर्निया का कानून है, वहां पे भी फेस बैनर में आ रहा है. इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड देयर. अब इमेजिन कर लीजिए 50 स्टेट में अपना कानून हो, किसी में नहीं हो, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. पर यूरोप में एक अपना कानून है कॉल्ड एज GDPR. This is the comparison which you can see later. What is the way forward? Data mapping, it's important for organizations. Now let's look at the requirements of businesses. कौन सा डेटा क्या कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं, कौन उसका यूज कर रहा है, किनको एक्सेस राइट है. जैसा कि हम ट्रांजैक्शन मैपिंग करते थे GST डेज में, इट इज समथिंग सिमिलर. डेटा मैपिंग, डेटा कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ऑल ऑफ दैट हैज टू बी मैप्ड. तभी पता चलेगा व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड in not complying with the law. Then consent mechanism has to be built in. We have seen that it is very prominent. Consent mechanism law mein, it is very prominent. That has to be built in. Stakeholder trainings, because of creating awareness of different stakeholders. एक organization में चाहे वो HR हो, चाहे IT हो, चाहे finance हो, चाहे sales हो, चाहे purchase हो, चाहे individual owner हो, whatever data they collect, they have to know how do they deal with that data in order to comply with the law. Aligning contracts, जहां भी contract के through आप data transfer कर रहे हैं किसी और person को, then it is important to have a proper contract whereby you make that third party, the data processor, also compliant with the law to pass on the obligation. तो कई जगह written contracts mandatory हो जाएंगे because of this requirement. If there is a breach at the end of the processor to whom you have transferred the data, then you may be penalized. Data का flow कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, all of that should be monitored. Data breach management, जब breach हो जाए तो कब report करना है, किसकी responsibility है, because it requires specific reporting to the board. और नहीं होने पे there are penal consequences. Gap analysis, आपने क्या कर रखा है for international organizations, if they have done something already, what needs to be done, extra requirement under the law, those organizations can carry out. Adopting data privacy tools, there are certain important software tools that can be deployed to map data to comply with the law. So it's a big assignment that needs to be carried out. And if a person is significant data fiduciary, I've already spoken कि उनकी क्या extra requirements हैं. Talking about penalties, there are serious penalties on data fiduciary जो कि 250 crores तक for certain incidences जा सकती हैं. Typically it can be up to 150 crore to 250 crores on data fiduciaries if they don't comply with the law. पहले तो, as I said in the beginning, it was to the extent of 2% of global turnover. Now they have capped it to 250 crores. So it can go up to 250 crores. And if for each breach, so you can imagine it's not the one-time penalty and clean chit. It is not like that. It can be multifold. Even 250 crores can be multifold depending on the non-compliances. So these are some key features. Professionals के लिए I've kept talking about the opportunities, but there is a complete career one can make in data privacy. The legitimate question which comes कि इसमें कैसे augment करें. Let's also talk about that. How to enhance skills. This is the app time, this is the app time. इसमें किसी ने lead नहीं लिया, and there are several opportunities which are going to come in to all of us if we venture into this task. So कई सारे courses है. There is an organization in India called Data Security Council of India. They also do a certified course for privacy professionals. One can go for that course. That will give you a good idea about the privacy requirements in India and globally, how this law has evolved. If you want, there are a lot of these universities doing certified courses in India and also abroad. They tell you all about how to carry out impact assessment, how to carry out gap analysis. Those kind of courses can be undertaken. And आज की तारीख में जितना professionals इसमें work होगा, I don't see so much bandwidth among all of us to tackle this kind of work. So
whatever you do, there will be a lot of opportunities in this area. I can foresee, at least my assessment is that. Okay. Then if you get hold of there are these YouTube videos. Now, if you get conscious about it and you have awareness, there are a lot of good articles that are getting published in the newspaper. So एक कोई certified course ऐसा नहीं है. I mean, in GST days, in other courses, we have seen institute also carrying out certain certified courses. Maybe they will come up. They have done certain all India sessions earlier, and big number of chartered accountants, more than few thousands were there in such discussions. So people are interested, but this is how you can do it. At least to begin with, you can do a certificate course from DSCI. That is what most people do. If you are more interested, then there are similar organizations abroad. We can give you a list if some people are keen on that. You can pursue that after doing this certification from India, which will give you a good understanding of how to comply with privacy laws. So with this, my discussion part is over. Now we can take up questions and answers. Over to you, Manmohan Sharma Saab, Puneet Agarwal Saab, to take the discussion further, and how do we go about it? Thank you very much, गजेंद्र महेश्वरी जी. आज का सेशन वाकई में आपने जो दिया है बहुत ही यूजफुल हम लोगों के लिए रहेगा. मैं सुमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं वो एक एक करके उनको टेकअप कर लें. Yes, sir. Thank Over you, to Sumit ji. Manmohan ji, for giving me opportunity. And first query, अगर हम क्वेश्चन बैंक से देखते हैं, विष्णु जी is asking, is this law applicable for only Indian citizen on Indian land or abroad? Right. So, Vishnuji, this law has got extraterritorial implications. It is not only applicable to Indian citizens. First of all, when you talk in India, it is applicable to each and every person who collects data, be it an individual or a company or a trust or an NGO, any person who collects the data. Even for that sake, government is responsible. But yes, government has got a lot of exceptions because of its role. But technically, even government is responsible, subject to Right. those exceptions. And even when this data goes abroad, anybody located outside India handling data of Indians, if they use it for providing goods or services to people in India, then yes, even they are bound by this. Right, sir. And sir, second query by Vises Gupta ji. So doing DIN KYC of directors, we are restoring Aadhaar, PAN card, whether it is attract this law on the professional? Yes, sir. If you are storing personal data, see, Aadhaar is a data which has got identity proof and you can associate with an individual. If you see part by part, this qualifies as personal data. और आपने अगर आधार की फिजिकल रखी है अपने पास तो ठीक है, बट उसको उसकी कॉपी डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर ली है, देन यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. पहले के जो लॉ के वर्जन्स थे उसमें स्मॉल प्रोसेसर्स का एक कॉन्सेप्ट था लॉ में, वो यहाँ पर हटा दिया गया है. ओके, तो ऐसा कोई अभी तक स्मॉल प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट एक्ट में नहीं है. विल बी सरप्राइज इट कम्स अंडर द रूल. तो एक एक्सेप्शन है जो मैं यहाँ भी बताता चलो, स्टार्टअप के लिए, कुछ स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर लेगी. एंड मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर हैज रिप्लाइड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, स्टार्टअप ऐसा नहीं है जिसको फंडिंग आ गई है, जो बूटस्ट्रैप स्टेज पे स्टार्टअप है, सिर्फ उन्हीं के लिए कुछ एक्सेप्शंस होंगे सो दैट दे कैन सर्वाइव. अदरवाइज as on today we don't see any exception. Right, sir. Because sir, every CA having personal KYC of every person, every client, individual, whether company or partner, so we are liable to keep. See, आप वो चार्टेड अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास तो कंपनीज का भी कई तरह से डेटा आता है, तो वहां पे एग्रीमेंट बनेगा प्रॉपर हर असाइनमेंट का, जिसमें कंपनीज उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएगी कि आपको मैं जो डेटा हैंडल कर रहा हूँ आप भी सिक्योर तरीके से रखेंगे. वी विल ऑल हैव टू सी इन्वेस्ट इन सिक्योर्ड मैकेनिज्म्स. अगर हमारे सिस्टम्स बहुत वीक है और यहाँ से ब्रीच हो गया, देन यू नो देयर कैन बी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस.
And we always say that this is going to be an enabler. In the longer run, it is going to be an enabler. Business disabler नहीं है. अगर data secured है, reputation आपकी sanctity बची हुई है, it is more like an enabler, right? So it will create some rifts in the beginning, but in the longer term, people will find it very beneficial. All of us in different capacity. Yes. So, sir, Parthaji is asking whether this एक मिनट, सुमित applicable. जी, Yes, सुमित sir. जी, Yes, Puneet ji, please. इसी क्वेश्चन से फॉलो अप एक Yes, पूछना please. चाह रहा था कि जिन लोगों से हम डेटा, जिसका भी डेटा है, डेटा प्रिंसिपल हम जिसे कह रहे हैं, उसके डेटा पे कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट है इस लॉ के हिसाब से. Absolutely. तो ये जो डेटा सेल होके, लेट अस से देयर इज अ बिजनेस हु वांट्स टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ, लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स. समवन वांट्स टू get himself established into a NBFC, giving loans to the example I gave, professionals, targeted audience. There can be a startup which wants to start a business to run a restaurant aggregator service. Again, he would like to have some data for that, because that is the basis for doing it. Likewise, let us say there is a telecalling company which says that I will be able to provide you services to target a particular audience so that you can sell your products. And the list can go endlessly. You gave example of a old car company which sells and buys old cars. Now, if the business model is based upon data, that data will definitely be a data which will fall within this definition, because person has to be identifiable. Only then this would be relevant. Exactly. So what I understood is that this entire business of buying and selling data, from the date this act becomes, its sections are notified. I'm not clear on whether the provisions have been notified, but the date the provisions are notified, that will all become completely illegal. Okay, absolutely. So to give examples, Truecaller we all know, officially has announced that this act is a business risk for them in India, a big business risk. In Europe, we keep coming across on a daily basis severe penalties. Few months ago, American Express was penalized for selling the data. American Express. And there are data breaches at the end of hotels, at the end of universities, at the end of different callers. All of those are prohibited to work if they don't obtain consent. अब होगा क्या, हर एक को कंसेंट मैकेनिज्म बिल्ट इन करना पड़ेगा कि आपके डेटा को मैं सेल करूंगा, इस पर्सन को सेल करूंगा. बाय डिफॉल्ट लोग हाँ कर देंगे, बट कई पर्सन कहेंगे कि नहीं, आप सेल नहीं कर सकते. तो जब वो विड्रॉल का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई विड्रॉ कर सकता है उस पर्सन का डेटा, अदर्स विल नॉट बी एबल टू सेल. अभी देखिए ये प्रिंसिपल है, इसका किस हद तक इंप्लीमेंटेशन होता है, रेगुलेशन होता है, दैट इज अ सेपरेट टास्क, बट दिस इज हाउ इट इज. जो आपने बोला सेल वाला, इसको भी थोड़ा आप क्लैरिफाई करो, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टूड ड्यूरिंग द डेलिबरेशन एंड आई वाज जस्ट स्कैनिंग थ्रू दिस प्रोविजन, इट गिव्स एन एग्जांपल. इट सेज एक्स एन इंडिविजुअल डाउनलोड वाई अ टेलीमेडिसिन ऐप, वाई रिक्वेस्ट द कंसेंट ऑफ एक्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ हर पर्सनल डेटा फॉर मेकिंग अवेलेबल टेलीमेडिसिन सर्विस and accessing her mobile phone contact list, and X signifies the assent. Right. Since phone contact list is not necessary for making available telemedicine service, her consent shall be limited to processing of her personal data for making available telemedicine service. So you discuss this concept of relevance of the data being collected. So वो पहला फिल्टर है, वो पहला फिल्टर. तो अगर वैसा है तो वो बेच ही कैसे पाएगा? मान लीजिए मैंने दे भी दी, तो बेच कैसे पाएगा? Absolutely. Yes, you have put it into right perspective, BG. First of all, collect ही नहीं कर सकता जो irrelevant है. हम सेल करने की बात कर रहे हैं, वो डेटा जो relevant और collect कर लिया गया है कि consent दिए बेचने के. Right. So these are the two filters which will operate independently. Right. So therefore what you mean to say is कि लोग जाकर एक्चुअल में ये कंसेंट दें कि जब आप डेटा बेच लेना, तभी वो लेकर के बेचने वाली स्थिति आ सकती है. वो हम आज जब कुकीज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दे रहे हैं ऑलरेडी. अगर हम प्राइवेसी पॉलिसी देखेंगे, जो यूरोप की वेबसाइट्स है, कई बार हम एक्सेस करते हैं, उनमें ये कुकी पॉलिसी आती है और एक्सेप्ट करते हैं हम. उनमें लिखा होता है कि हाँ बेचेंगे,
क्योंकि वो ब्राउजर से आपकी डिटेल ले रहा है और वो बेच रहा है, हमने एक्सेप्ट किया है. All right, we can deliberate more, but this is having very interesting repercussion. Absolutely. Right, sir. So now, sir, next question is from Parthaji. Whether this law is applicable on government department like MCA, income tax, and other. Yeah, it is applicable, but because they provide these kind of services which are necessary, so they don't have this consent and all these kind of requirements. उनको ऐसे consent form और लेने की जरूरत नहीं. There are a lot of dispensation for government as such. So next question but yes, to begin with, it is applicable. Right, sir. सुमित जी एक मिनट, महेश्वरी जी आप PPT क्लोज कर देंगे? Oh, sorry, I'll do that. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Yes. So next question is this also applicable to data collected for investigation purpose by forensic investigators? Yes, whatever purpose you collect, it is allowed. But if it is legal forensic, then there are these consent and all. This can be dispensed with. अगर कोई legal requirement में कर रहे हैं, तो उसके dispensation है. But ऐसे ही कोई forensic examination के लिए कर रहा है privately, then yes, it is applicable. Then it is applicable, right? Yeah. I think Vandana ji का question है responsibility of corporate under the act. Yes. For the personal data of employees. Already been discussed, I think. Yes, Vandana ji, it will be applicable, very much applicable. Naval Bajaj ji asking, consent manager is a platform, technology solution, or a person? It will be a person having the platform or solution to manage the consent, and that person has to be registered with the board. That is the requirement under the law. Right. Next question is information extracted during consent given and utilized after consent withdrawn. तो वो information after withdrawal of the consent, वो information erase करनी पड़ेगी. But during consent period कुछ कर लिया गया है जिसकी consent है, then it is allowed. How we will ensure कि उसने data erase कर दिया after the consent? Then definitely debatable. वो तो see वो एक देखिए implementation globally challenge है. इसके जो principles हैं उसका कोई audit कोई करे कुछ ऐसे करे, इसलिए क्या significant data fiduciary में तो हो जाएगा जहाँ पर audit हो रही है independent. बाकी सब जगह पर कैसे होगा that we'll have to see. It is a challenge. Let's accept that. But जो significant data fiduciary में जो audit के प्रावधान है उसमें यही सब comply करना है कि वास्तव में erase हुआ है या नहीं हुआ. कंसेंट के बिना बेच दिया गया या नहीं बेच दिया गया, डेटा बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट कलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ. सो दोज आर रिक्वायरमेंट्स व्हिच विल बी सर्टिफाइड इन ऑडिट एंड एग्जामिन्ड इन ऑडिट. गजेंद्र जी, ये जो आपका प्रेजेंटेशन है ना, ये बंद नहीं हुआ, मतलब ये शेयर्ड आ रहा है अभी भी, उसको कर दीजिए, स्क्रीन में सब पूरा आ जाएगा. हाँ, स्टॉप शेयर कर. ओके ऑल ओके. So next Rajesh is asking, does the provision on the use of data without the consent of the data principal means that the marketing agency will stop making marketing related calls? See, अब ये देखिए दो अलग अलग चीजें हैं. उनके पास डेटा कहाँ से आया वो प्रॉब्लम है, ठीक है. अब वो मार्केटिंग कॉल्स का तो एक TRAI बड़ा ही उसके पीछे पड़ा हुआ है. They have tried lot of measures but still they have not been able to stop. अभी वो कुछ और भी अडॉप्ट कर रहे हैं. तो मार्केटिंग कॉल आना, DND होना और डेटा जिसके बेसिस पे मार्केटिंग कॉल आना, ये दो अलग अलग चीज है. उनके पास डेटा कैसे है वो लिमिट हो जाएगा. So sir, it means if they are having data, then they can make calls. Definitely they can make calls if they are licensed. There are TRAI regulations for these marketing companies. अब वो कई लोग बाईपास कर लेते हैं, वो दिक्कत है. TRAI भी उनको मॉनिटर नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारे पास डेली बेसिस पे दिन रात कॉल्स आती रहती हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स. इसमें क्वेश्चन मेरा है महेश्वरी जी, इसमें क्वेश्चन मेरा है कि जो डेटा हमारे फिड्यूसरी के पास बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट है और जो डेटा इस एनेक्टमेंट के बाद आया है, उसमें कोई डिफरेंस है या? सर ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है आपने. तो इस लॉ में ट्रांजिशन प्रोविजंस हैं. लॉ में ट्रांजिशन प्रोविजंस ये कहते हैं कि जब लॉ ये अप्लाई कर जाएगा उसके रीजनेबल टाइम फ्रेम में, अब एक्ट में रीजनेबल टाइम फ्रेम कितना होगा ये अभी डिफाइन नहीं है, उसके रीजनेबल टाइम फ्रेम में सारे डेटा फिड्यूशरी, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनीज है, सारे डेटा फिड्यूशरीज इसको
कंप्लाई करेंगे। तो हमारे पास पुराना डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जितना भी पड़ा है, टेक्निकली हमें उसके लिए कंसेंट्स लेनी पड़ेगी, या हमें वो पर्पस सर्व हो गया है तो वो इरेज करना पड़ेगा। Right. अब ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन हो यहाँ पर भी कि किसने रखा है कि नहीं रखा है। अब सीसीआई भी काफी चीज करता है, टीआरएआई को भी काफी रोल से, कितना हद तक वो जाके इम्प्लीमेंट कर पाते हैं उनकी भी अपनी लिमिटेशन है। बट अभी हमें सिर्फ प्रिंसिपल्स देखने हैं। एप्लीकेशन, yes, it is going to be a challenge for all of us, but this will develop a culture of data privacy for sure. ये बात certain है। शायद इसीलिए इन्होंने पेनल्टीज इतनी हैवी रखी हैं जिससे कि लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए। सर वो बिल्कुल डेटरेंट होंगी, एक दो जगह हो गई तो फिर सभी कोई अप्लाई करने लग जाएंगे। और इसके अंदर ना एक बात और, मतलब all these things are very important in the sense that some applicability or no applicability is different. Take an example of National Anti-Profiteering Authority. Yeah. It is not that National Anti-Profiteering Authority has been able to watch everyone की GST benefit pass on हुआ कि नहीं। Exactly. Yes, but, yes. But what is the larger ramification of it? Absolutely. And वो जिस केस को पकड़ लिए उसके अंदर क्या हाल हुआ। और एक और चीज मैंने नोटिस करी, इस पूरे एक्ट में अपील का कोई प्रावधान नहीं है। There is no appeal provided if I am not wrong. वो थोड़ा सा उसमें ये है कि टीडी सेट को, जो ऑलरेडी टीआरए के लिए है, उनको अगर बोर्ड कोई पेनल्टी देता है तो उनकी अपील वहां पे प्रोवाइडेड बाद में टीडी सेट के। राइट, तो वो मे बी लिमिटेड है, पूरी है क्या, वी हैव टू सी इट, बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग सब्जेक्ट इन इटसेल्फ बिकॉज़ एवरीवन इज कमिंग इनटू अ फोल्ड ऑफ इट। सर लिटिगेशन अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, वो काफी बहुत सारा लिटिगेशन होने वाला है, बहुत सारी कंप्लेंट्स होने वाली है, जैसे एंटी प्रॉफिटरिंग में हुई थी उससे काफी ज्यादा, उससे काफी there ज्यादा। are many people who are very conscious. I have heard people not keeping phones because they don't want to, they want to show, मतलब they want to say it's their statement, and there are many people who are like there are many people who are like they think they are conscious keepers. So all those aspects, and so therefore to assume that ultimately it may not be implemented in full form and in a big country, but the point is that whosoever comes into their fold, these aspects would have to be, then for that person they will absolutely in very different। और हमारी कंट्री में यस और हमारे यहाँ बहुत सारे एक्टिविस्ट हो जाएंगे जो इसके लॉ के एक्टिविस्ट होंगे, जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। करेक्ट जेन्युइनली एक्टिविस्ट होंगे, जो बहुत हर कॉर्नर में उस तरह के एक्टिविस्ट मिलेंगे जो यही देखेंगे कि कहाँ क्या डेटा मिसयूज हो रहा है। इट विल बी मोर गवर्न्ड बाय पीपल rather than the organization. It's a very interesting thing. इसमें कुछ इनफैक्ट जो इंडस्ट्री से हमारे जो बैंगलोर चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। आई वुड लाइक टू फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, एक क्वेश्चन उनका है, मैं तीनों चारों इकट्ठे बता देता हूँ, देन यू कैन एड्रेस दोस। कंसेंट मैनेजर इज अ प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन और ए पर्सन? The second question that he has raised is, in a company normally which function shall do this implementation? Is it CIO, CISO, CTO, or is it ERM? Interesting question है कि इतना difficult task किसको करना है। Also, how is this law different from GDPR? Any key differences? Then Navalji is saying rules are yet to come and not possible to make this law applicable until detailed rules are given. So these are 3-4 questions. There are more questions that will be taken up, but ये आप एक बारी। कंसेंट मैनेजर तो मैंने आंसर किया था, दैट इट कैन बी अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड थ्रू अ प्लेटफॉर्म द पर्सन विल मैनेज द कंसेंट। वो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म होगा किसी पर्सन के पास जिसके थ्रू मैनेज होगा, उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। दैट इज वन। सेकंड, यस वेरी इंटरेस्टिंग, आपने कहा जीडीपीआर एक मदर लॉ है ग्लोबली, दैट इज ट्रीटेड एज वी कॉल जीडीपीआर एज द गोल्डन रूल ऑफ डेटा प्राइवेसी। जो मोस्टली ग्लोबली लॉज अप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में जीडीपीआर के बेस पे हो रहे हैं, बट हमारे यहाँ कुछ जीडीपीआर का क्रिटिसिज्म काफी भी होता है। कई कंट्रीज ने जीडीपीआर इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो बड़ा बिजनेसेस के लिए एक हर्डल है, एंड वी हैव ट्राइड टू रिजॉल्व दोज हर्डल्स। सो दैट्स व्हाई मोर कंट्रीज आर नाउ लुकिंग एट दिस लॉ एज अ न्यू अवतार, न्यू वर्जन, जीडीपीआर 2 sort of a thing. That's how they are looking at Indian law. और इस पे भी आप देखेंगे, जैसा हमने देखा स्क्रीन में, 3-4 वर्जन के बाद में ये आया है। सो इट इज टेकन इन अ हेल्दी मैनर बिकॉज कंट्रीज भी चाहती हैं, हर कंट्री चाहती है कि लॉ इनेक्ट करे, बट दे डोंट वांट दिस टू बी एन इम्पेडिमेंट फॉर बिजनेसेस। दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि नवीन जी कि कौन फंक्शन करेगा। जनरली ये जाता है आईटी के पास, बट लीगल भी उसमें उतना इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनीज के पास लीगल में ये फंक्शन जाता है, काफी कंपनीज के पास
लीगल में है, क्योंकि कंप्लायंस रिलेटेड भी है, इसमें एग्रीमेंट्स बनाने पड़ते हैं, इसमें पॉलिसी बनानी पड़ती है। आईटी तो एक सिक्योरिटी पार्ट देखेगा, बट बाकी सब कंप्लायंस लीगल देखेगा। और इवन फाइनेंशियल्स के पास भी कई जगह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है, जहाँ पे ओवरऑल फाइनेंस फंक्शन काफी मजबूत है, तो कुछ जगह वहां पर भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया जाता है। आई होप आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ देम। जी Yes, जो sir. भी या Sir, two, जो भी three सवाल। small queries are there. So we can. Okay. Partha Sen ji is Sure, asking. sure. Applicable. This is applicable on organization who conduct exit polls, etc. वो एग्जिट पोल पे क्या होता है कि पर्सनल डेटा नहीं आता ना। एग्जिट पोल मैं दे रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं एक फॉर्म भरता हूँ कि मैंने ये दिया, अगर मैं फॉर्म में नंबर भर रहा हूँ तो वो पर्सनल डेटा हो गया। Right. अगर मैं सिर्फ फॉर्म में एग्जिट पोल एजेंसी से भी कलेक्ट कर रही है कि कौन जीतेगा, और मैं पोलिंग बूथ से बाहर आते हुए एग्जिट पोल होता है, दैट इज द एग्जिट पोल। पोलिंग बूथ से बाहर आते ही कंडक्ट होता है, और उस पोलिंग बूथ से बाहर आते ही मैं सिर्फ बटन दबा रहा हूँ पैरेलल, इसके बेसिस पे एग्जिट पोल हो रहा है, जिसमें मेरा पर्सनल डेटा नहीं हो रहा तो नहीं होगा। Right, sir. I Sir, hope it's clear. Yeah. Atul ji is asking, RBI require us to keep records of loan for 5 years after the repayment. What we will do if the borrower asks us to delete his data after repayment? हाँ जी, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ पर कहा गया है अगर किसी और लॉ की रिक्वायरमेंट में आपको रखना पड़ेगा तो आपको ये प्रोविजन वो लॉ प्रिवेल करेगा, स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर दिस जनरल लॉ। It is already addressed in this law. Okay. And one more question. A person goes in the market and collect information as appearing on the signage and then digitize and process that data. If it is used or misused, how you will see in case of light of this? सर वो पर्सनल डेटा नहीं है। पहली बात तो एक साइनेज से आप क्या लेंगे? ABC एंड कंपनी उसका नाम है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो कंपनी का डेटा है, किसी व्यक्ति विशेष का डेटा नहीं है। अगर वो किसी पर्सनल का डेटा नहीं है या ऐसा डेटा जिससे पर्सन आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है, जैसे कि एक कार नंबर है, उससे पता नहीं चलता ओनर कौन है, तो सारे कार नंबर एक पार्किंग में खड़ी हो, मैं उसका डिटेल ले लूं जिससे ओनर नहीं पता चले, देन इट इज नॉट गवर्न्ड बाय द लॉ। इट हैज टू बी एसोसिएटेड विद एन इंडिविजुअल, देन ओनली द लॉ ट्रिगर्स। Right. Shashank ji, you want to ask last query? Shashank ji? I just like to have one question. Yes. If we do understand the costing of all the whatever the laws come into the country, I am very sure because I file the returns of the cyber security experts, and I really like to bring in the platform that the developers have a very low salary, but the marketing people of the cyber security personnel have a very huge salary and a huge cuts in the, because it's kind of a job in which you actually showcase that yes, there is a need of the security in the IT systems. Every company is trying to get secured, their data secured. They are already trying to comply with all the maximum capabilities what they have. But I'm very sure that if I compare the CA firm, and because we have discussed about that, how the CA firm can be penalized when we collect the data of the clients. And if I really like to implement a small solution also in my office, it will cost me a lot. And as Puneet sir has really given us a guidance that as the anti-profiteering law has came up, but it is now applying only on the 1% of the total GST people. I think in that way, if I have to accept the law, then it is okay. But if I have to accept that it will be applicable on everyone, and whenever there is any kind of consequence upon me, then all the authorities will come and jump upon me and penalize me for everything, whatever I am doing in my life. So I think that kind of things are coming into this nowadays. So what is your take on this? I first of all, this is a right observation, I must say, rather than a question, right? ये अपने आप में एक observation है. Okay. So I agree that there are these business challenges for everybody, for chartered accountants, for lawyers, for all professionals, for all companies.
और हम डिफरेंट कैपेसिटीज में काम करते हैं, हम कई जगह इंडिविजुअल्स हैं, कई जगह हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. So there are these challenges, let's agree. But what is the bottom line? If we see on an overall basis, let's put in black and white, it's a good law or it's a bad law. I think most of us agree that it's a good law. Why it's a good law? Because otherwise, the manner in which data is handled, or I must say misused, is rampant. This cannot go on and on. With technological development, there will be more compromise of data if we don't address this problem sooner rather than later. अब बिजनेस के लिए कॉस्ट है माना, बट इमेजिन किसी बिजनेस के यहाँ आपको पता है कि डेटा ब्रीच होता है. वुड यू लाइक टू डू बिजनेस विद दैट पर्टिकुलर कंपनी? एग्जैक्टली. कि आप इसको डेटा देते हैं, एक पेमेंट गेटवे, मुझे पता है कि वहां पर जैसे ही मैं 50 रुपए का कैशबैक लेता हूं, अगले दिन कॉल आने लग जाते हैं, मुझे पता है क्योंकि जितनी बार मैं भी लिया है, अगले दिन कॉल का नंबर डबल हो जाता है. तो मैं सीरियसली सोच रहा हूँ उस पेमेंट गेटवे को यूज ना करूं, कहीं और यूज करूं. ऑल्दो दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई. कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनका बिजनेस मॉडल हम उनके एड्स देखते हैं. आई एम नॉट नेमिंग कंपनी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव. जो डेटा के बेसिस पे बिजनेस मॉडल है. अब वो हमारा डेटा किसी तरह से यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, वो डेटा से अर्न कर रहे हैं. आपके डेटा से, दिस इज देयर बिजनेस मॉडल, दे आर अर्निंग मनी. डू यू थिंक इट्स प्रॉपर? नो. सो वी हैव टू develop this tendency, a culture whereby we are required to comply. ये एक necessity है for all of us. In the meanwhile, yes, मैं भी, मेरे भी यहाँ पे I can see several files. All of us can see several files. If we turn around, वो सारा data उसका मैं क्या करूँगा? There will be a problem. I must say there is a problem. So consent and all, आप formally contract करेंगे, उस contract का एक advantage भी है that your contract is established, your terms are final. तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है. That's why I say that in a longer run, yes, it will be difficult, but in the longer run, it will give all the good benefits. Gajendra ji, one last question, because actually it really helped me a lot. Yes. पुनीत सर, इसमें आप भी सपोर्ट करिएगा. जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं ना, वो मेरे को एक 100 पेजेस की बुकलेट देते हैं, एंड आई साइंड ऑल द 100 पेजेस. क्या सीए फर्म्स, एमएसएमईज, क्या हम ऐसी एक लाइफ टाइम कंसेंट बुकलेट ले सकते हैं क्या फ्रॉम द आवर क्लाइंट्स की भाई आप साइन करके चले जाओ, एटलीस्ट वी कैन बी सेफ गार्डेड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स? मतलब ऐसा कुछ भी किया जा सकता है? उनको बता के करेंगे एवरीथिंग, वी कैन गाइड टू देम दैट हम आपसे कंसेंट ले रहे हैं, एवरीथिंग वी आर टेकिंग. सर वो लीगली तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी ले लोगे, 1-2 पेज की, उससे सब हो जाएगा. Okay. वो मतलब वो इस लॉ का पर्पस नहीं, थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर रहे हैं. ठीक है, लीगली तो आज आप पावर ऑफ अटॉर्नी लेके साइन कीजिए ना, कोई मना ही नहीं है. बट बैंक नहीं एक्सेप्ट करेगा. राइट सर. ये इश्यूज प्रैक्टिकल है. हमें सेपरेटली मतलब एक लिस्ट बना करके मे बी what we can do is we can now, this was like a first exercise that we did. Now what we can do is we can list out different situations. They may be practical situations concerning our own firms, our own, because most of us are more or less serving MSME clients. तो उनके जो lowest on the pedestal हैं, उनसे हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से questions भी ज्यादा आ रहे हैं. Your question relating to cost, your question relating to retention. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मतलब जस्ट अ फूड फॉर थॉट कि the clients, the chartered accountants and consultants are nowadays expected to keep the data, and they are asked by enforcement agencies even after 10 years, 15 years. जी आपने इनका क्या ऑडिट किया था, आपने क्या इंफॉर्मेशन ली थी. So on that basis probably certain declarations etc can be got signed for data etc. But as Gajendra ji has rightly stated, it's about the identification of a person more than the data of that person that you keep. तो आप उनकी बैलेंस शीट रख रहे हो, उनका ऑडिट डेटा रख रहे हो, that is not what is really the subject matter of that law. तो हमें थोड़ा सा और पहले खुद को कॉन्शियस करके we'll have to decide कि ये इशू रेज कहाँ हो रहे हैं, then we'll have to start finding out solutions to it. And as it has also been discussed कि अभी रूल्स भी नहीं आए हैं, but capacity building, I think the message from today that I take is that capacity building into this can be a future for professionals. Or and very aptly what Gajendra ji said was
that if you look at the vast requirement of this law and the onerous conditions that this law puts on the businesses, on the data principle, etc., probably our capacity building would be far lesser than what would be required. So it is going to be a vast field for preparing ourselves, for training ourselves, for taking these things forward. And definitely this is going to be a very big field. और interestingly, जिस तरीके से इसको एक special board administer करेगा, this is going to become a very, very hot kind of a board, which will be filled with lots of works to do. And professionals would have a big role to play. That's what, after hearing Gajendra, I feel. मनमोहन जी, कुछ प्रोग्राम मेरे ख्याल से करते हैं क्लोज, काफी समय हो गया. हाँ, थैंक यू गजेंद्र जी. मेरे को इसमें एक पूरे एक्ट को सुनने के बाद एक कहावत याद आ रही है कि देखन में छोटे छोटे लगे और घाव करे गंभीर. तो ये जो एक्ट है ये बेसिकली 40 प्रोविजन है शायद मुस्लिम इसमें, और कोई इसमें प्रोवाइजो नहीं है, लेकिन इतना छोटा एक्ट है, इतना सिंपल है, लेकिन इसके घाव बहुत गंभीर है. तो इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगा शशांक अग्रवाल जी को. प्लीज गिव वोट ऑफ थैंक्स. Thank you, Manmohan ji. I, on behalf of Bharatiya Vitt Salahkar Samiti, first of all, really like to thank Advocate Gajendra Maheshwari ji, today's speaker, and a great speaker, and he really elaborated the topic in a very lucid manner, very well spoken to all the guests and participants, and really make us feel that yes, we have to move in this area. We cannot say that it is a bad law or a good law, but we have to move, because that is a correct words from the Gajendra sir, that this law is really required at this time, and what the changes in government will implement in the near future, that is totally upon our suggestions only. So thank you so much, Gajendra sir, and I really thanks to Advocate C.A. Puneet Agarwal ji, the president of Bharatiya Vitt Salahkar Samiti, for holding all the responsibilities for running the great institution, because I am really, all the dignitaries on this dais is a mentor to me and many youngsters in the CA profession and the legal profession. So thank you again, Puneet sir, and my General Secretary sir, Sandeep Sharma ji, again, my senior, my big brother. Thank you so much. Manmohan sir, thank you so much for giving this opportunity. And Sumit Garg ji, my convener sir, thank you so much. And all the participants, thank you so much for joining today as a great session for Gajendra sir. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Shashank. Thank you, Bhaiya. Thank you. Thank you. Thank you.